अच्छा, let me tell you now, they are asking statement based question. Question is to find the code of love. How many statement or statements is slash are required out of the given statements? ऐसा देगा, to find the code of love, how many statements is are required. They are not asking what is the code of love. They are asking to find the code of love, how many statements are required. I give you statement number 1. Statement number 1 is, in a certain language, I love chocolate is coded as 2, 3, 4, not in the same order. ऐसा नहीं कि I is 2, love is 3, not in the same order. Statement number 2, chocolate is tasty is coded as 3, 6, 7. Statement number 3, tasty ice cream is coded as 6, 6, 8. अब अभी क्वेश्चन में बाकी है मेरे दोस्त. To find the code of love, how many statement is required? Statement number 1, I love chocolate is coded as 2, 3, 4. Chocolate is tasty 3, 6, 7. Tasty ice cream 6, 6, 8. Here answer options. Answer option A, B, C, D. Answer option A is one statement. One statement doesn't mean statement number 1. Means out of this 3 statement, any one statement or like one statement. Yeah, only one statement. One statement only. ऐसा लिखा था, one statement only. One statement only. फिर लिखा हुआ 2 statements only. All 3. None. None of the above कह सकते हो, none of the above. This is exactly what they are doing. With simple question, they are reframing it in statement based question. वही सेम चीज उठा के उसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं. हाँ जी, व्हाट इज द आंसर? ए, बी, सी, डी. डी. किसी ने 2 स्टेटमेंट बोला था बीच में. Tell me the 2 statements where we can find the answer. अच्छा चलो. Now your next question. We will handle this question after that. Tell me code of each and every word. What is the code of I? What is the code of love? What is the code of chocolate? What is the code of is? What is the code of tasty? What is the code of ice cream? अच्छा, one by one. पहले मैं आई से स्टार्ट करूंगा. 2 और 4 वी कैन नॉट कंफर्म. तो आई के लिए आ रहा है आइदर 2 और 4. व्हाट अबाउट लव? 2 और 4 वी कैन नॉट कंफर्म एक्चुअली. ओके. चॉकलेट 3. व्हाट अबाउट इज? 7. व्हाट अबाउट टेस्टी? 6. व्हाट अबाउट आइसक्रीम? 8. So here also we can see the repetition, intra statement, inter statement, within a statement. Tasty 6, 6. Tasty, so tasty is 6. Then we say filling the blanks. Tasty 6, 6 khatam. 8. Ice cream is 8. Then you can see the repetition in statement 1 and 2 about chocolate. Chocolate. What is common number? 3. So chocolate is 3. Filling the blanks. 3 and 6 use 7. Is 7. I love. Like here these are used once and 2 and 4. We need extra statement to confirm what is the code of I, what is the code of love. Till then we cannot conclude either 2 or 4.
So they asked to find the code of love. How many statements are required? Statement 1 alone is not sufficient. Statement 2, statement 3, or any of the combination. If you are using all three statement together, जय वीरू बसंती तीनों मिल के भी लव का कोड नहीं निकाल पा रहे. If you use all the three statements, still we are not in position to confirm what is the code of love. That way answer is none of the above. चलो इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं क्वेश्चन. Same question, same thing. Now here, to find the code of tasty. शांत गदाधारी भीम शांत. Let me complete the question. My question is, to find the code of tasty, how many statements is required? Statement 1, 2, 3, one statement only, two statement only, all three, none of the above. One statement only, and what is that statement? Statement number 3. Why in statement number 3 tasty is used twice, 6 is used twice? With the help of statement number 3 only, we can find the what is the code of tasty. So here one statement only is sufficient. Next question. To find the code of is. To find the code of is, how many statements is the required? टू स्टेटमेंट. जो टू स्टेटमेंट बोल रहा है आ जाओ मैदान में. हाँ जी, कौन कौन सी दो स्टेटमेंट? कौन सी दो स्टेटमेंट? थर्ड स्टेटमेंट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट में टेस्टी पता चल गया, आइसक्रीम पता चल गया. और फर्स्ट में तो इज है ही नहीं. हाँ, चॉकलेट क्या है? सेकंड. हाँ, हमें स्टेटमेंट 2 भी चाहिए होगी, ऐसा कुछ. देखो ये वीरू है, ये जय, ये बसंती है. आप कह रहे हो वीरू बसंती, जय गया छुट्टी पे, जय को नहीं बोल सकते आप. आप कह रहे हो स्टेटमेंट 2. अब स्टेटमेंट 2 है ही नहीं आपके पास. अब बताओ व्हाट इज द कोड ऑफ इज. अच्छा, और कौन था टू स्टेटमेंट वाला? नन ऑफ द अबव. वो कह रहे थे ना, मैं स्टेटमेंट 1 और 3 दोनों से इसका कोड निकाल सकता हूं. नहीं निकल सकता. ऑल 3 तो ओके, लेकिन 2 की काफी सारी आवाज आई थी कहीं कहीं से. 2 स्टेटमेंट वाले कौन कौन है? हाँ जी, 2 स्टेटमेंट. कौन कौन सी स्टेटमेंट सर? स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3. स्टेटमेंट 2 एंड 3 में टेस्टी का तो कोड पता चल रहा है 6. हियर 3 एंड 7 का कंफ्यूजन है. वेदर चॉकलेट इज 3 और 7, हाउ वी कैन कंफर्म? कैसे कर दो सर? आप ये बताओ, आप देखो, आप ये बताओ पहली 3 स्टेटमेंट में कौन कौन सी स्टेटमेंट यूज करके आपका इसका कोड आ जाएगा? पहली दूसरी से आ रहा है, दूसरी तीसरी से आ रहा है, या पहली तीसरी से आ रहा है, या तीनों से आ रहा है? यू नीड ऑल 3 स्टेटमेंट. हाउ कम? बिकॉज व्हेन यू कंफर्म अबाउट टेस्टी, देन यू विल कम टू नो टेस्टी. टू फाइंड द कोड ऑफ इज, यू शुड नो द कोड ऑफ चॉकलेट एज वेल एज टेस्टी. आपको टेस्टी और चॉकलेट दोनों का कोड निकालना होगा. टू कंफर्म द कोड ऑफ इज, you should know what is the code of tasty, what is the code of chocolate. To confirm the code of tasty, you have to use third statement. To confirm the code of chocolate, you have to use statement 1. Statement 2 is required क्योंकि is है ही statement number 2 में. Without statement number 2, how you can find the code of is? So here all 3 are required. Let us try one more question. Here, to find the code of chocolate, how many statements is are required? 2. And what are these 2 statements? 1 and 2. You use 1 and 2. Chocolate is common.
3 is common. By using statement 1 and 2, you can find what is the code of chocolate. Clear? Any doubt? Acha, to find the code of ice cream, how many statement is are required? Only one statement required, which is statement number 3. सिर्फ third statement से we can confirm what is the code of ice cream. Why? Because you have to confirm tasty to confirm ice cream. Ice cream को confirm करने के लिए tasty confirm कर दो. And tasty is 6. तो बचा क्या? 8. Statement 3 sufficient to tell you what is the code of tasty, what is the code of ice cream. But to find the code of chocolate, you have to use statement 1 and 2. To confirm code of is, you have to use all 3 statements. To confirm the code of I or love, even all 3 statements are not sufficient to confirm what is the code of I, love, because we have two answer options for I and love. Data inadequate, we need some extra information. Are you getting the point? This is the future. यही क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे. 2 क्वेश्चन दिखा दिए उन्होंने. Like they have shown 2 questions in 2023 where they will ask this type of questions. How many statements are required? 1 statement required, 2 statements required, 3 statements required, none of the above. Okay.